हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर ये वाली ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन किस तरह से तैयार करते हैं वो मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। तो जिन लोगों को भी ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन सीखनी है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैंने किस तरह से राउंडर और स्केल की मदद से ये पूरा राउंड बनाया है और उसके अंदर ये स्टार तैयार किए हैं और ट्रायंगल तैयार किया है, वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम राउंडर की मदद से और पेंसिल की मदद से हम 8 सेंटीमीटर का माप लेंगे और राउंडर को बीच में रखकर पूरा सर्कल तैयार करेंगे। जो सर्कल बनेगा 16 सेंटीमीटर का। उसके बाद वही 8 सेंटीमीटर का राउंडर को हम जो आउटलाइन हमने गोल तैयार की है उसके ऊपर रख के चाप लगाएंगे। जो चाप यहाँ पे आपको येलो रंग में दिख रहे हैं उस तरह से तैयार करेंगे। उसके बाद उसके अंदर स्केल की मदद से आमने सामने वाले पॉइंटों के ऊपर हम लाइन तैयार करेंगे और इस तरह से ट्रायंगल तैयार करेंगे। तो एक सीधा ट्रायंगल बनेगा और एक उल्टा ट्रायंगल बनेगा और एक अच्छा सा स्टार तैयार हो जाएगा। और उसी पॉइंट के अंदर और बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, उसको भी हम जोड़ेंगे तो एक स्टार के अंदर दूसरा स्टार तैयार हो जाएगा और लास्ट में वही पॉइंट के अंदर और 3 पॉइंट मिलेंगे, वहाँ पे ट्रायंगल तैयार हो जाएगा। तो ये कितना आसान है वो सीखने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दीजिए। Samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding. Stop. Woo. Woo. Stop. Stop.